Good evening. Hello and welcome. You're watching Viewpoint. I'm Anusha Soni. The district of Nuh in Haryana had an eerie calm to it. With Section 144 imposed in and around the district, internet suspended in many parts, the holy month of Shravan was a tumultuous chapter in the history of this town. Just about 4 weeks ago, riots had broken out in different parts of the district amidst a series of clashes between the majority and the minority community. Taking lessons from the Braj Mandal Yatra of July 2023 that had led to clashes between the two communities, the local administration was indeed on a high alert. Only about 50 individuals were allowed from various Hindu organizations to perform Jal Abhishek at the local Shiv temples. VHP claims that local ancient temples are victims of encroachment. They need to be protected. The other side claims that communal tensions are being flared up purposely for political gains. While a tense day is past, but communal tensions are unlikely to die down permanently. The opposition claims that the administration went soft on a particular community. Is there any merit to the argument? Why does the right to worship of one community inflame another? Our focus on Viewpoint tonight. यात्रा को हम यात्रा के रूप में भी पूर्ण करेंगे। यहाँ से धीर महादेव जाएंगे, वहाँ से श्रृंगार जाएंगे। और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए यह हार और जीत का सवाल नहीं था। हम करके दिखाएंगे, हम नहीं करने देंगे, ऐसे प्रतिष्ठा पे हम नहीं खड़े थे। समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता ही है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा, मॉर्निंग में आकर के जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके, अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए। यात्रा का जो नतीजा निकला है वो पूरे देश ने देखा। कितने ही लोग हैं जो मारे गए, कितने लोगों के मकान पे बुलडोजर चल गया, कितने लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। एक बार फिर वही आंधी हरियाणा के अंदर विश्व हिंदू परिषद चलाना चाहती है। शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अपनी तफ्तीश कर रही है, जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिन जिन लोगों की जो लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। Well, as I said earlier, Section 144 was imposed in Nuh and certain adjoining areas. The entire standoff between the two communities has a history of long simmering tensions that have existed. 3 temples of Mahadev that have existed in this area, in this particular district, where the VHP claims attempts of encroachment have been done. There was a mega yatra by the Vishwa Hindu Parishad that was organized in the last week of July. And during those clashes that erupted, it was during that yatra that the clashes had erupted. There were also serious allegations against the VHP that certain people accused of lynching were part of that yatra. However, towards the end, they did not show up. We'll be joined by our guests who are joining us on the broadcast tonight. We have Mahima Singh, who's the spokesperson of the Congress party, joining us on the show. Mahima ji, thank you so much for speaking with us. For starters, thank God that today was a calm day and the entire day could pass without any instance of violence being reported. Why does the Congress party maintain that the administration was soft on a particular community? Jai Hind. What the leaders of the Congress party have remarked today, I think, resonate with the modus operandi of the BJP in Haryana and elsewhere. We have been watching Manipur burning for the past so many months, and now we saw what happened in Haryana the last month. And as our senior leader Pawan Khiraji spoke earlier during the day, and he made it clear that the BJP, it's playing out through its street soldiers, the RSS's
playing out through its street soldiers, which is the VHP. I mean, you look at this, Anusha, it becomes very clear when you see that there's a clear denial from the BJP government in Haryana, and the VHP clearly says, we have not asked for any permission. No permission has been sought, so there is no question of any denial. I mean, this in itself is a mockery of the state of law and order in Haryana. You are telling the government that you can keep on issuing whatever or standing orders, but we'll operate as per our own, our own discretion. And on the 13th of August, I'll categorically indicate towards this incident that happened on the 13th of August. There was a Mahapanchayat that took place in Palwal district, you would remember. Yeah. And the Haryana government had clearly said, had warned, per se, at least, for the matter of optics, they had warned that no hate speech should take place. However, what we saw, the VHP leaders, three things I'll point out to. One, they said, if you raise a finger, we'll break your hands. Two, they said we sought licenses for 100 rifles. Three, they instructed their workers not to be afraid of any FIRs because that will be managed. So that is the way these, right-wing outfits operate, and the government never acted against them. And today, the government, it's like an orchestrated tug of war. The government, kept on saying that we'll not allow any yatra. But here they were, at the very boundaries of Delhi and the Nuh district. What turned out to be, a calm day, I think had to be so, ought to be so. It shouldn't have happened a month ago also, because the government. But I also think that, while they might have managed the situation today by allowing those 50 devotees or the 50 members of particular religious organization to go to a particular temple of Shiv and offer their worship and prayers there. But the situation is far from being resolved. I believe we have other guests as well joining us on the broadcast. Raman, Malik of the BJP, Mr. Vijay Shankar Tiwari of the VHP, and Mr. Shahid Ali, who is the president of the United Muslim Front, is also joining us on the broadcast. Mr. Raman, Malik, coming to you. We have Mahima Singh ji from the Congress party, who has directly accused the administration of being hand in gloves with the VHP. They are arguing, good that you managed the situation today, but the manner in which the series of events unfolded about 4 weeks ago was a testament to how the authorities had neglected the situation. And even right now, sir, today's day was managed, and, hats off to the local administration, but the communal tensions prevail. Raman, Malik ji. Are you able to hear me? I can hear you just fine, sir. Please go ahead. Yeah. So there are a couple of facts which cannot be ignored. So let's start with Mahima ji's comment. Hands in glove, I'll tell you what is hands in glove. Hands in glove is when a particular community in Maharashtra of Brahmins were targeted for Nathuram Godse. Or for that matter, 1984, Sikhs were targeted. Or Muslims in the Nalli riots. So these are just three examples I can give you. I can give you a list of them. So that is what targeting is. So let's understand what we are speaking about. What happened on the 31st of June was unfortunate. The procession was a peaceful procession which was targeted and attacked by stones and glass bottles, petrol bombs. Then there were people who had firearms on the hills, but the Congress would not speak a word against it because Kamalnath says, "Hum Muslimanon ki party hain." Or Surjewala says, those who are voting BJP or supporting BJP are Rakshas. Or for that matter, he abuses mother and sisters, abuses from the dais to the people. So this mindset of Congress has been there prevalent ever since they have taken power in 1947 onwards. But now, let's come down to this particular issue. We had a situation where there was a law and order issue. The government and the administration took certain decisions now, and they have executed that. We had made sure that those who think that they can supply armies of perpetrators of the 31st of June from Rajasthan, they were not able to do so again. Those who
made sure that they spread venomous messages. They were not able to do it again. Also, Sir, those Raman who ji, wanted Raman to ji, plan you- and make a new Godara were not able to make so. Sir, if the situation is well under control, even these 50 devotees, when they had to go to the temple today, and if your version is to be believed on the face value, I'm sure Mahima ji wants to come in on that, then why did these 50 devotees need the kind of security and the cordon to go with them when they were going to the temple? If everything is fine on the ground, if the administration has acted and taken action against the culprits, whatever administration believes is the right step to go forward, then why did these 50 devotees require this kind of protection? No, you see, it was not a group of just 200-300 people who did it. There were multiple number of people, and as I said, there were people imported from the neighboring state of Rajasthan also, as per the local intelligence and local information which everybody knows in Haryana has come in. So now the point is that we do not want that their designs to make a new Godara is executed in total. A quick response. And we are wanting to maintain law and order as per the guidelines of the Constitution. A quick and response from various Mahima provisions Singh of ji, law. then I'll bring in VHP and Shahid Ali also into the discussion. Mahima ji, 30 seconds to you. I want to ask the BJP spokesperson here what action was taken against the speaker in Mahapanchayat on the 13th of August, who said that it is because of Gandhi that this country still has Muslims, that Haryana, that Nuh still has Muslims. Haryana has a population of 7% Muslims. You know, in its history since 1966, it has never seen communal violence. However, BJP comes in 2014 and starts rolling out its hate agenda. And here are right-wing outfits on one end, mongering hate on the streets of Haryana, giving effect to their communal intentions, and the Chief Minister of Haryana, masquerades himself as a peace ambassador and says that we will not let any violence happen. If they were true to their intentions, if their words were true to their intentions, actions would have been taken against those who spread hatred on the 13th of August during the Mahapanchayat, where there were standing instructions. That I think Mahima ji, in the line of fire has been the VHPs ever since we began this discussion. It's only fair that I bring Vijay Tiwari into the discussion. Vijay ji, VHP और उनकी गतिविधियों पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं. कांग्रेस का एक सीधा सवाल है कि कहीं ना कहीं रिसेंटली एक जो पंचायत हुई थी, वहां पर भी VHP के बहुत सारे लोग मौजूद थे. पहले भी जो शोभा यात्रा या जो पूरी यात्रा निकली थी, उसमें भी VHP का इन्वॉल्वमेंट था. और कहीं ना कहीं आपका जो पूरा मकसद है वो हिंसा भड़काने का है. आप श्रद्धा का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पर आरोप है, मैं इसका उत्तर चाहूंगी आपसे. ये आरोप किसका है, जरा एक बार मैं पूछ सकता हूँ? कांग्रेस पार्टी का. हमारे पास इस समय कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह जी भी है हमारे साथ. ठीक है, हाँ ठीक है. देखो, जब 31 तारीख की जो यात्रा निकली थी, तो वहां पर जो हिंदू मारे गए थे, जो तीर्थयात्री मारे गए थे, उनके मरवाने के पीछे कांग्रेस के नेता थे. तो अब ये स्वीकार कैसे करें? और अभी तक हिंदू विरोधी सारी की सारी राजनीति ये करते रहे हैं. पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई मुस्लिम कार्यक्रम होता हो, कोई प्रोग्राम होता हो, एक मिनट, किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है. लेकिन नूह में, मेवात में अगर हिंदू कोई कार्यक्रम होगा तो सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होगी? और जहां इनके मामन खान रहते हैं वहां पर सुरक्षा क्यों चाहिए? तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो सारा चला है, जो भी नूह में यात्रियों के साथ जो मारपीट हुई है, उनको मारा गया है, पत्थर चले हैं, गोली चली है, मोर्टार चले हैं, उसके पीछे कांग्रेस के नेता थे. और वो नाम उनके सारे जो सर्च हुआ है, जो ढूंढा गया है, उनके व्हाट्सएप कॉल देखी गई हैं, उनके सारा विजय जी क्षमा कीजिए, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन आप ये जो आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें शामिल है. मैं आपके पास वापस आऊंगी और इस पे आपसे कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी चाहूंगी. पर इस समय हमारे पास VHP से आलोक कुमार जी जुड़ गए हैं, हु इज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द विश्व हिंदू परिषद राइट नाउ. आलोक कुमार जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आज का दिन तो निकल गया, लेकिन कर्फ्यू लगा था नूह में, 50 लोग जा पाए जल अभिषेक करने के लिए. आपके तो प्लान्स थे कि बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु जाएंगे. VHP पर आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर खराब करने की कोशिश कर रहे होते तो हजारों लोग जाते. कल सवेरे जो
मैंने एक बयान दिया, उसमें मैंने कहा था कि इसको अप्रिशिएट करते हैं कि G20 हो रहा है। कहते हैं कि मेवात का इलाका संवेदनशील इलाका, इससे हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहते, पर जिस यात्रा का संकल्प किया है उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। कल श्रावण का 8वां और अंतिम सोमवार था आज, इसलिए ये यात्रा पूरी होना आवश्यक था। हमने सांकेतिक की है, 125 लोग इन में आए हैं और हमको संतोष है कि हमारा संकल्प भी पूरा हुआ और हम किसी के लिए समस्या भी। आलोक कुमार जी, आपके कनेक्शन में बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और लूंगी। जितने भी श्रद्धालु थे जब वो जल अभिषेक के लिए गए तो उनको हैवी सिक्योरिटी में वहां पर ले जाया गया और हैवी सिक्योरिटी के साथ उनको वापस लाया गया। वीएचपी पर यह भी आरोप है कि लगभग मेरे ख्याल से जब 13 तारीख को एक पंचायत हुई थी, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी भी बात कर रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे भड़काऊ भाषण या भड़काऊ स्टेटमेंट्स थे, बयान थे जो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने दिए थे, क्योंकि आपको पुलिस या प्रशासन का कोई डर नहीं है। मैं नहीं, वो जो पंचायत थी। आलोक जी, मैं क्षमा चाहूंगी, आपका कनेक्शन बहुत खराब है। आई विल रिक्वेस्ट माय टीम टू रीपैच आलोक कुमार जी। वी कैन बेयरली हियर हिम और अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। आई विल गो बैक टू द डिबेट। शाहिद अली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आई कम बैक टू यू। A lot of allegations have been raised by the VHP on the Muslim community as well. It is being argued that whenever there is a procession or there is some kind of activity or a religious activity which is related to the Hindu sentiment, it requires some kind of protection. यही चीज थी जो विजय जी अभी बोल रहे थे कि जब भी कोई हिंदू उत्सव होता है उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है नूह में, इसका जवाब मिलना चाहिए। अब से पहले जितने भी प्रोसेशंस हुए, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हुए, किसी भी मजहब के हुए, किसी को किसी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। और इस बार जो ये सब कुछ हुआ 31 तारीख को, वो क्यों हुआ सबको मालूम है कि अगर आपने हेट स्पीचेस रोक ली गई होती, अगर आपके द्वारा जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ भाषण चल रहे थे, भड़काऊ मैसेजेस चल रहे थे, और जो ये जो गुंडे किस्म के लोग या क्रिमिनल किस्म के लोग जो प्रोसेशन में शामिल हो गए थे, सारे श्रद्धालु क्रिमिनल नहीं थे, जो क्रिमिनल किस्म के लोग शामिल हो गए थे, जो हथियार लेके जा रहे थे, यहाँ पर जो बैंड हथियार है उनको लेके जा रहे थे, अगर उनको रोक लिया गया होता, अगर उनको सिर्फ रोक लिया गया होता, मैं कहता हूं कि दोनों तरफ के जो उन्मादी लोग हैं, अगर उनको रोक ले, उन पर सरकार नजर रख ले, तो सरकार की नजर में होते कोई भी उन्माद हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको नहीं रोका जाना, दंगे को भड़का देना, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता शामिल है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता शामिल है। क्योंकि जब इंटेलिजेंस सरकार को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं, भड़काऊ मैसेजेस चल रहे हैं और कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद सरकार उस पर कोई स्टेप नहीं ले रही, ना उन लोगों को गिरफ्तार, आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि भानु मानेसर को तो, और जो दूसरे लोग हैं उसमें से एक बलि का बकरा किसी को बना के गिरफ्तार कर लिया 13 तारीख को जो हुई। अब किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई भी भड़काऊ भाषण था उसको गिरफ्तार करिए फौरन, उसके खिलाफ एफआईआर करिए, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसको सिचुएशन को इस कदर वोलेटाइल किया जा रहा है कि यहां पर ये दंगे भड़के। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करता हूं इस बात की आपके माध्यम से कि इन लोगों की जांच जरा अच्छी तरह से करवा लें, कहीं आईएसआई से तो फंडेड नहीं है ये लोग कि इस तरह की जो अब G20 यहां पर चल रहा है, हम लोग चांद पे जा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप है जो आप लगा रहे हैं। आलोक कुमार जी हमारे साथ वापस हैं ब्रॉडकास्ट पर। आलोक कुमार जी, हमारे साथ शाहिद अली है, महिमा सिंह है, कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। वीएचपी पे जो इल्जाम लगाए, मैं आपसे सीधे सीधे पूछती हूँ कि जिस दिन दंगे भड़के, जिस दिन हिंसा हुई और उसके बाद भी बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो वीएचपी या उन श्रद्धालुओं के जत्थे का हिस्सा बन गए थे। बहुत सारे ऐसे वीएचपी के सो कॉल्ड समर्थक हैं जिनके पास हथियार थे और वो कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे। ये आरोप गंभीर है और गलत है। मोनू मानेसर का नाम अभी लिया जा रहा था जी। राजस्थान जो कांग्रेस का शासित प्रदेश है, उसके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने मीडिया से कहा है कि हमने मोनू मानेसर को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया
क्योंकि उस हत्याकांड में उसकी कोई भी संलिप्तता नहीं पाई है। ये उन्होंने मीडिया को कहा। मेरा एक बात कहना है कि हेट स्पीच के बारे में वो मेरी स्पीच है या तेरी स्पीच है, इस फर्क को समाप्त करना चाहिए। जो कोई भी हेट स्पीच देता है किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का, किसी भी ग्रुपिंग का, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, दोषी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून ने अपना काम करना चाहिए। दुर्भाग्य ये होता है कि हम एक दूसरे के हेट स्पीचेस को कोट करते हैं और कोट करके अपनी स्पीच को जस्टिफाई करते हैं। नहीं आलोक जी, आप एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। किसी भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को इसी तरह से बात करनी चाहिए, लेकिन एक सीधा सवाल है कि विश्व हिंदू परिषद की आड़ में अगर कुछ लोग हथियार लेके घूम रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं या दंगे भड़का रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किस तरह का दायित्व बनता है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम घोषणा करें जी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि ये हमारा व्यक्ति नहीं है, और फिर हम पुलिस को कहें कि तुम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो। मैं आपसे कहूंगा कि हमारे भाषणों की जांच करवाने के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने गैर जिम्मेवारी के भाषण नहीं दिए और आपने ठीक कहा, अगर हमारे नाम की आड़ में कोई कुछ करता है तो सरकार कार्रवाई करे, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि कुछ मंदिरों की बात है जो विश्व हिंदू परिषद ने कही थी, और जैसा कि मैं मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, पुरानी कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, उन मंदिरों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कुछ चिंताएं जताई थी। उसमें और भी कुछ हिंदू संगठन थे जिनके बयान थे, लेकिन ये जिन मंदिरों की आप बात कर रहे हैं उनमें क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं जिनको विश्व हिंदू परिषद हाईलाइट करना चाहता है? आप कौन से मंदिरों के बारे में बात कर रही हैं? एक श्रृंगार महादेव का मंदिर है, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूं तो, और कुछ शिव टेम्पल्स की बात हुई थी जहां पर यह बात की जा रही थी कि वहां पर इंक्रोचमेंट का इशू आ रहा है। माफ कीजिएगा अगर नाम गलत हो तो, लेकिन इंक्रोचमेंट क्या वहां आपके लोकल टेम्पल्स में किसी तरीके का इशू है जो विश्व हिंदू परिषद उठा रहा है? मैं एक एक मंदिर के डिटेल से परिचित नहीं हूँ, पर मुझे संतोष है कि श्रृंगार मंदिर का जो बहुत बड़ा हिस्सा ये लोगों ने एनक्रोच किया हुआ था, पुलिस उसको मुक्त करा पाई है और वो उन्होंने वापस मंदिर को सौंपा है। ये समस्या देश भर की है और देश भर के पूजा स्थानों की है। इसके बारे में भी हमको ये प्रयत्न करना होगा कि मंदिरों की भूमि का एनक्रोचमेंट नहीं हो, श्रृंगार का था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आई वांट टू गो बैक टू द डिस्कशन वंस अगेन। Shahid Ali ji, VHP clearly argues that if there is somebody who has done wrong from our organization, the police and the administration should come forward and arrest them. Now, are you arguing that the government has not done its job and the government is hand in gloves with organizations like VHP? Is that your point? मुझे कहावत याद आ रही है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। जी। What steps they have taken? Please ask them to cite even one example or one step which they have taken to control these kind of persons, to not to make hate speeches, to tackle with these kind of criminals, these kind of terrorists, those who have been causing terror in the atmosphere, those who have been causing rift in the society. Please ask them to cite even one example or one step which they have taken. कुछ भी कह देंगे साहब, हम तो ये ऐसा कह दिया हमने, या हम ऐसा कह देते हैं कि साहब वो हमारा नहीं है। आप बताइए ना किस किस को आपने पकड़ के पुलिस को दिया, किस किस को आपने कहा कि हाँ साहब इनको गिरफ्तार कर लीजिए, ये लोग हमारे लोग नहीं थे। तो जो लोग वहां पर हथियार लेके चल रहे थे, जो लोग वहां पर उन्माद फैला रहे थे, क्या उनमें से रमन मलिक जी, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है? एक बात होती है बोल देना, बड़े शब्द बोल देना, जैसे कि बोल रहे हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और आप बोल रहे हैं कि आपने सब पे एक्शन लिया है, कि लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद के लोगों को या हिंदू संगठन के उन लोगों को जिनने कोई भी अनैतिक या गैर कानूनी काम किया है, हैव दे बीन अरेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन?
देखिए, बहुत सारे विषय हैं जी। और इन विषयों को एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए कुछ लोग चेष्टा कर रहे हैं आपकी डिबेट पे भी। मैं एक चीज बड़ी क्लियरली आई वांट टू से which has to be understood. We have made sure that we take care of everybody who disrupted the entire law and order situation in that area on the 31st and who were instrumental before the incident happened and after the incident also who were who went hiding and who are still hiding. And Raman ji, सवाल तो यही है. That's the moot question that they are saying, that you're saying this in as many words, but you cannot cite a single example. You cannot cite a single example. आप इनको कोई उदाहरण दे सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हमने 300 से ऊपर लोगों को अरेस्ट कराया है, जो दोषी हैं, जो छुप रहे थे, जो पुलिस के ऊपर फायर कर रहे थे, उनके अरेस्ट के समय उनको एनकाउंटर करके भी हमने अरेस्ट कराया है। तो हम तो कानून की अनुपालना कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आज आपके यहाँ पे पूछता हूँ, ये सारे की सारी जो जमात है ना, ये चुप इस बात पे है। मैं पूछना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जो इनका पाला हुआ, कांग्रेस का पाला हुआ एक व्यक्ति है, उसने जो अभी ये भड़काऊ भाषण दिया कि अगर VHP निकालेगी हम ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे, ये लेकर none of them were competent even to have a word of condemnation for him. As I'm coming to the close of this debate, I have to give Congress party also a chance. Mahima Singh ji, a lot of things have been said by the Congress party, including the fact that you're responsible in some way, as VHP argues, for inciting riots, and somewhere the likes of tickets are working under the leadership or under the guidance of the Congress party. You're equally responsible. अनुषा, इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है. This is what the BJP does. And then there are these organizations that work under the cover of the BJP and rear hoodlums like Monu Manesar. And then the BJP says that the Rajasthan government is responsible, or whoever is responsible. Monu Manesar is being reared, is being protected by the Vishwa Hindu Parishad. They know his whereabouts, but they don't hand him over. There are 6 FIRs against Monu Manesar in Haryana, 1 in Rajasthan. Rajasthan police comes to Haryana to prosecute Monu Manesar. Haryana police registers an FIR against the Rajasthan police itself. Apart from that, weeks ahead of this yatra in July, there was a virtual war on social media going on. There was intel by the CID provided to the government of Haryana, which was ignored. We heard the Deputy Chief Minister of Haryana telling himself that we were not prepared, we had not been informed properly. So you see, one is that there is breakage between the coalition partners of Haryana government. JJP speaks one language and the BJP speaks another, which is why the law and order is failing, because the BJP is so power hungry, and to cling to the power, they will go any mile, they will go to any extent at the cost of law and order, at the cost of innocent lives of the people of Haryana. They have turned the green state of Haryana into a battleground, into a communal battleground, and it is shameful. And let's see about the 300 arrests that the administration is claiming that they have made so far. In how many cases they are even able to secure any kind of conviction or even get some kind of custody of the accused? Because the Delhi riots cases are an example where multiple arrests were made by the Delhi police authorities, but case after case the courts have given bail to many accused because the police has failed to produce evidence. And that's the reality of communal tensions in our country. They make for great optics as far as political debates are concerned, but in court of law there is thin and flimsy evidence that administrations are able to produce. With that, it's a wrap. Mr. Raman, Malik, Mahima Singh, Vijay Shankar Tiwari and Mr. Shahid Ali, thank you so much for joining us on the broadcast. We are slipping into a very short break, but on the other side we talk about the alliance, INDIA. There's a crucial meet, a third meet, which is all set to happen in Mumbai. Ahead of that meet, the cracks are pretty imminent. Now, would they be able to? Will the alliance be able to work through these cracks? That's the key question here.